गाइस, वेलकम बैक टू फ्रूगल फन। मेरा नाम सौमी है और मैं बहुत ही रिसेंटली वियतनाम गई थी। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ फ्यू ट्रैवल व्लॉग्स फ्रॉम देयर, बट मैं ये सिट डाउन वीडियो इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी सारी ट्रैवल प्लानिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो ट्रैवल व्लॉग्स के थ्रू देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग अबाउट वीजा, ट्रैवल एयरफेयर, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, करेंसी एक्सचेंज, बजट, थिंग्स लाइक दैट। और अब ये वियर्ड हेयर सिचुएशन को इग्नोर करते हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। So the first thing I want to talk about is visa. Now for an Indian passport, आप दो तरह के वीजा अप्लाई कर सकते हैं. One is single entry and the second one is multiple entry. Multiple entry costs $50, $50 US, and आप 3 महीने के अंदर कितने बार भी वियतनाम के अंदर बाहर कर सकते हैं. Single entry costs $25 and that's a more logical one to apply for if you are traveling from India, because to sort of justify the travel time, the airfare, I'm sure आप एक बार से ज़्यादा तो नहीं जाएंगे 3 महीने में वियतनाम. How to apply for a visa? There are really 2 ways. One is you can apply for a pre-authorization letter beforehand, and then when you are in Vietnam, तब आप visa खरीद सकते हैं. This whole process costs about $40 because the pre-authorization takes about $15. Then when you are at the port of entry in Vietnam, you have to pay another $25. ऊपर से आपको 1-1.5 घंटा वेस्ट भी करना पड़ जाएगा एयरपोर्ट में. So that's not advisable. The other way to go for it is to apply for an online visa. Now online visa के लिए आपको सिर्फ $25 पे करना है. You just need to have a credit card or an online net banking account to be able to pay for it. और फिर जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे वियतनाम में, तब आपको कोई वेट की जरूरत नहीं है. You can just cross through the immigration by showing your online visa. So compared to the on arrival visa, the online visa is much more convenient. Now secondly, let's talk about the ports of entry. And by port of entry I mean India से जब आप वियतनाम जाएंगे तो आप कौन सी सिटी में पहले लैंड करेंगे. So there are really 3 main ports of entries in Vietnam. First is Hanoi. Hanoi is the capital city of Vietnam. Secondly, Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City is a very important city because of the role it played in the Vietnam War. Thirdly, Da Nang. Number 3, let's talk about airfares. Now, frankly, मैं जब वियतनाम गई थी, मैं हांगकांग से गई थी और मेरा रिटर्न फेयर was about 15,000 to 16,000 rupees. बट मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी ऑन GoIbibo, Make My Trip, Skyscanner, etc. और मैंने देखा कि डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम इन इंडिया, the prices, the airfare prices could vary anywhere from 25,000 to 40,000. Secondly, I could be wrong, but मैं जब रिसर्च कर रही थी तो मुझे कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं दिखी फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम. But if you are aware of any such flights, let me know in the comment section below. However, realistically speaking, अगर within sort of 25 to 30K के बीच में आपको वियतनाम रिटर्न टिकट खरीदनी है, then you might have to go through the other popular ports of Southeast Asia like Singapore or Hong Kong or Thailand. Now let's talk about currency exchange. So firstly, वियतनाम में जो करेंसी यूज होता है, it's called Vietnamese dong. और बहुत ही अनलाइकली है कि डायरेक्टली इंडिया से आपको वियतनामीज डोंग मिल जाएगा by converting rupees. What you would probably have to do is convert your rupees into dollars or pounds or euros, and then when you are landing at the airport, you can get your money exchanged there. So first thing is, मैं बहुत ही ज़्यादा strongly encourage करूँगी कि आप एयरपोर्ट से ही मनी एक्सचेंज कराएं, because वियतनाम सिटी के अंदर काफ़ी स्कैम्स होते रहते हैं and it's difficult to know which are the trustable money exchangers. दूसरा तरीका ये है कि आप अपना इंडियन क्रेडिट कार्ड यूज करें at one of the Vietnamese ATMs to take out Vietnamese dong. Now 2 things to note here. First is, जब भी आप पैसा निकालेंगे तभी आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, विच इज आई थिंक अराउंड $5 और 300 रुपीज के आसपास होता है. एंड इट्स एन एक्सपेंसिव वे ऑफ टेकिंग आउट मनी बिकॉज एक टाइम में आपको बहुत ज्यादा कैश फ्लो नहीं निकालने देती. आई थिंक
you can take out about $100 worth, या मतलब 5,000 या 6,000 रुपए वर्थ वियतनामीज डोंग आप निकाल सकते हैं एक टाइम पे। सेकेंड थिंग टू नोट इज, हम जब हनोई के थ्रू गए थे, एयरपोर्ट के आधे से ज्यादा ATMs एक तो काम नहीं कर रहे थे, और दूसरा ये कि जब हम अपनी इंडियन कार्ड से मनी निकालने की कोशिश कर रहे थे तो वो somehow the transaction was not going through. So it was a very like harrowing experience for us. इसीलिए मैं स्ट्रांगली एनकरेज करूंगी कि आप पहले से इंडियन रुपीस को डॉलर्स या यूरोज में कन्वर्ट करके ही जाए, rather than banking upon getting out money from a Vietnamese ATM. Because मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था। एक और थिंग आई थिंक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है या फिर कंसेप्शन है अबाउट वियतनाम कि वहाँ पे स्कैम्स बहुत होती है, which is sort of true, I won't lie. I personally did not have to face any, but my trip was very short. And secondly, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि टैक्सी स्कैम्स बहुत कॉमन है वहाँ पे, कि आप जब टैक्सी वाले को कोई एक बड़ी करेंसी नोट देंगे एंड दे गिव यू चेंज इन अ बोगस और अ fake currency which you are then not able to use anywhere. Keep your money with you all the time. Keep your passport with you all the time. होटल के safe etc. में ना छोड़े money और passport. You have to be careful about such small things when you are in Vietnam. Better safe than sorry, right? Otherwise लोग वहाँ के काफी friendly है, ऐसा नहीं है कि it's unsafe for women, they'll rob you, they'll murder you for your money, ऐसा कुछ नहीं होगा। but ये छोटी छोटी scams काफी like होती रहती है वियतनाम में, so you have to be mindful of that and be prepared for that. Okay, now coming to the most exciting part, which is the budget. Now Vietnam is super cheap to travel with. Firstly, now जब आप travel कर रहे हैं obviously 3-4 चीजें हैं जिसके लिए आपको पैसे चाहिए. One is food, second is where you are going to stay, hotels, etc. and third is for doing all the touristy things. So let me cover each of them one by one. Firstly, food. फूड वियतनाम में बहुत ही ज़्यादा चीप है, मतलब फॉर $5 which is like about 300 to 360 rupees, you should be able to get a very lavish good meal, a very yummy meal for 2 people. मतलब बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी डेस्टिनेशंस में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कॉफ़ी के लिए मैंने मैक्स टू मैक्स 30,000 वियतनामीज डोंग पे किया है, which is like 100 rupees, and that's like the most expensive, so you can imagine. Now coming to hotel stays. Hotels are also much cheaper than what I've seen in India. We went for like really nice hotels, not resort type nice, but they were like very clean, free snacks when we entered, free drinks when we entered. Of course there was towels, toiletries etc. सब कुछ था. So उस लेवल का अमेजिंग होटल के लिए हमने $20 पे किया था for one time and $30 another time, both in Hanoi. Having said that, आपको इससे बहुत ज़्यादा cheap options भी मिल जाएंगे. Check out sites like booking.com, go for the reviews and you will hardly be disappointed. I think accommodation book करते टाइम एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहाँ accommodation book कर रहे हैं. For example, हम हनोई गए थे और हनोई में सारे जो टूरिस्टी थिंग्स है इट्स इन दिस प्लेस कॉल्ड द ओल्ड क्वार्टर. तो हमने वहाँ पे एकोमोडेशन बुक करी थी तो हमें $20 में मिली. जबकि मैं जब सर्च कर रही थी तो ओल्ड क्वार्टर से जो थोड़े दूर है दोज एकोमोडेशंस वर अमेजिंग एंड दे वर लाइक $10. सो ऐसे एकोमोडेशंस भी मिलेंगी, बट बी अ लिटिल माइंडफुल ऑफ आपके पास कितना टाइम है, आप ट्रैवल कैसे करेंगे एट्सेट्रा, एंड बुक अकॉर्डिंगली. सो आपको $5 to $7 के रेंज में भी प्राइवेट रूम विद बाथ एंड एवरीथिंग बेसिक मिल जाएगा. एंड इफ यू आर गोइंग फॉर हॉस्टल्स एंड स्टफ देन तो फिर बहुत ही चीप में मिल जाएगा, मे बी $3 to $4. I don't even know. Third thing is going around and doing all the touristy things. So of course कुछ टूरिस्टी जगहों के लिए आपको एक एंट्री फी पे करना पड़ सकता है, बट आई डोंट थिंक दे विल बी दैट बिग. However, you might have to book some tours, या फिर you might have to rent like a bicycle or a for something as cheap as $1 to $2 आपको एक पूरे दिन के लिए बाइसाइकिल मिल सकता है, and as cheap as $5 आपको पूरे दिन के लिए मोटर बाइक मिल सकता है. अगर आप कोई टूर बुक करते हैं, लाइक से फॉर इंस्टेंस हम हनोई से हलोंग बे गए थे, हलोंग बे का हमने एक क्रूज टूर बुक किया था, वो शायद थोड़ा एक्सपेंसिव हो, maybe around 5 to 10,000 Indian rupees per person depending on what tour you are going for.
So let's do a summary of the budget, right? Let's say आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे. Let's consider airfare of 30,000 rupees. फिर वीजा के लिए आपको देना पड़ेगा almost 1500 rupees. That's 31.5. 10 दिन के लिए अगर आप फूड का हर दिन का $10 मानते हैं, it will be like $100, which is another 5,000 rupees. That makes it 36.5. उसके बाद ऑब्वियसली आप घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा बहुत टैक्सी लेंगे. पर डे के लिए अगर आप उसके लिए $20 का बजट रखें तो 10 दिन के लिए होता है $200, which is like 15,000 rupees I would say. So 36.5, so 50,000 rupees हो गया. थोड़ा बहुत ऑब्वियसली आप बफर भी लेंगे, थोड़ा शॉपिंग भी करेंगे, कभी कभार आप ज़्यादा एक्सपेंसिव खाना भी खाएंगे. सो आई वुड से अबाउट 60 to 65,000 रुपीज़ के बीच में आपका 10 दिन का वियतनाम ट्रिप आराम से हो जाएगा पर पर्सन ऑफ कोर्स. The last things I want to talk about in this video is one, food, because Vietnamese food बहुत ही popular है. And second, what are the touristy things that you can do in Vietnam? So let's talk about food first. Now Vietnamese cuisine is very rice heavy. So they'll have rice paper rolls, they'll have rice noodles, everything is sort of rice and of course meat heavy. थोड़ा बहुत Indian touch भी है because they garnish it a lot with herbs like coriander, धनिया पत्ता, प्याज etc. से काफी garnish करते हैं. Actually मैंने एक पूरा food vlog बनाया है. What are some of the must have food items when in Vietnam? मैं यहाँ पे लिंक करने वाली हूँ, जरूर चेक करें वो वीडियो. और अगर आप वेजिटेरियन हैं then I'll say don't worry because हर वियतनामीज डिश का एक वेजिटेरियन वर्जन जरूर है. Like my husband is a vegetarian and he had a gala time trying out the vegetarian food there. So that's definitely not a thing to worry about. उसके अलावा सिटीज में आपको नॉर्मल इंडियन खाना या पिज्जा, पास्ता, बर्गर ये सब तो मिल ही जाएगा. बट आई वुड स्ट्रांगली अर्ज दैट यू ट्राई द वियतनामीज फूड बिकॉज इट्स अमेजिंग. दूसरा चीज जो जरूर वहाँ पे टेस्ट करे इज वियतनामीज कॉफी बिकॉज दैट कंट्री इज क्रेजी अबाउट इट्स कॉफी एंड दे रियली नो हाउ टू डू देयर कॉफी वेल. Lastly, let's talk about what are the things to see. What are the touristy things to do in Vietnam? Now, Vietnam is a land of varieties. इतना कुछ है करने को. वहाँ पे आपको राइस फील्ड्स भी दिखेगा, बीचेस भी दिखेंगे, रिच कल्चर, हेरिटेज, वियतनाम वॉर का हेरिटेज, ओल्ड आर्किटेक्चर, सब कुछ दिखेगा डिपेंडिंग ऑन विच प्लेसेस यू आर गोइंग टू. फॉर इंस्टेंस यू आर गोइंग टू हनोई. हनोई इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड स्ट्रीट फूड एंड इट्स ऑल्सो पॉपुलर बिकॉज हलोंग बे जो कि वियतनाम का सबसे ज़्यादा touristy destination है, that's closest from Hanoi. It's like a 3-hour by road journey from Hanoi to Halong Bay. Hanoi is also known for its egg coffee. Ho Chi Minh City is known for its spicy food and its role in the Vietnamese wars. There are places like Da Nang, which is closest to Hoi An. Hoi An is a small city which with its water canals and beautiful lamp sheds and lamp lanterns, beautiful old street. Then there are places like Ninh Binh, which is known for its beautiful scenery. Then there's a historical town called Hue, which is known for its beautiful and old architecture. So these are just some of the top 4-5 destinations. But अगर आप explore करना चाहे तो वियतनाम में 1 महीना भी कम पड़ जाएगा. Okay, I think that's going to be all for this video. I have tried to make this video as informative as possible. But अगर आपके फिर भी कोई burning questions है, then don't hesitate to put them in the comment section below. I'll definitely reply back to them. And before I sign off, if you found this video useful, don't forget to hit the like button. Consider subscribing if you haven't already, because मैं हर हफ्ते एक नया travel video post करती हूँ. I'll see you soon. Bye.